Next 30 seconds and we will be okay. So the PDF file of 2B, a question plus solution is not downloaded. Says the file is missing. Okay, the PDF file of exercise 2B means topic exercise for the exponential distribution. Yes. Once we will be done with this session, then I will be sharing that PDF. Okay, Okay. drop a simple message over the WhatsApp group. I'll be Okay. doing that. Okay, so good morning, all of you, and today we are going to discuss about one of the continuous probability distribution. In the previous session, we had discussed about the most important and most I can say a quite useful probability distribution, that is normal distribution. उसकी बात हमने last lab में की थी. Now, today we will be discussing about the exponential distribution. So, be over your screen. My screen is visible to all of you, and hopefully I am loud and clear, audible. Is it? Good. So, as we all know that we are dealing with the probability part, and this we are dealing with a probability distribution. There are two different types of probability distribution: discrete distribution and continuous distribution. Right now we are dealing with the continuous distribution or usme. We are already done with the normal part, normal distribution from Kalyan. Now, today we will be dealing with the exponential distribution. Now, what is exponential distribution? There is a relation between one of the discrete distribution and this continuous distribution. एक discrete distribution हमने सीखा हुआ है, that is Poisson distribution, is it? Now, there is a fixed relation between Poisson distribution and exponential distribution, or in other words, I can say inverse of a Poisson relates to exponential. Inverse of a Poisson relates to exponential distribution. Inverse in a routine one. Because Poisson distribution is actually the discrete probability distribution. Poisson जो है वो discrete है. हम जो बात करने वाला exponential वो जो होगा वो continuous distribution है. पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ that inverse of Poisson, a kind of inverse of a Poisson will lead towards the exponential distribution. Now how? कैसे? And then after some other continuous distribution आता है, gamma है, chi-square है, पर ये हम लोग वो 5th unit में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे. So today in this session we'll be dealing with the exponential distribution. Now what is exponential distribution? Let's start. As I said that Poisson and exponential, both these are having a kind of relation. Poisson distribution and exponential distribution both are having a kind of relation. Yes, sir. Yeah. Let me show you. What I'm gonna do, मैं comparatively एक Poisson का example आपको दूंगा, exponential का example दूंगा. I'm gonna discuss some of the examples कि जिसको एक नजरिए से हम Poisson में देखेंगे, दूसरे नजरिए से हम उसको exponential में देखेंगे. So let's start a journey for the exponential distribution, and in between कहीं पे भी कोई भी doubt है, as our rule, as you guys are quite aware about our rules for the session, you may stop me in between the lecture anytime. You may interact with me. कहीं पे भी डाउट है, कुछ भी बात अगर दिमाग में नहीं जा रही है, समझ में नहीं आ रही है, तभी आपको मुझे स्टॉप करना है और मुझसे बात करनी है. Feel free to talk with me during any time of the lecture. Okay. So let me give you first example. ये सारे एग्जाम्पल खुद से बनाए हुए, कहीं से उठाए नहीं. देखिए, फर्स्ट मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, वी आर हैविंग अ ऑफिशियल वेबसाइट, इज इट marwadi.edu.in. हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप लॉग इन करते हो. ठीक है. अब लेट मी कंसिडर वन ऑफ द बेसिक एग्जांपल, द नंबर ऑफ हिट्स to Marwadi University's website in 1 minute. If I'm going to consider my random variable as number of hits to our website in 1 minute, कौन बताएगा? If I'm talking about number of hits, so then if number of hits is my random variable, so
it will act as a continuous or it will act as a discrete. वो random variable क्या होगा, continuous होगा कि discrete होगा? I'm Discrete. waiting. हाँ, discrete होगा. क्यों? क्यों भाई discrete होगा? क्योंकि हिट क्या हो सकती है? एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन, 1 लाख हो सकती है, 12 लाख हो सकती है. Is it ना? It will be an integer. Values और will be minimum, integer. यस, मिनिमम इट विल बी 0 कि भाई कोई 1 मिनट में किसी ने विजिट ही नहीं किया हमारे वेबसाइट को. ठीक है, तो मिनिमम इट विल बी 0. मैक्सिमम वो क्या हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है कि मान लीजिए अभी वायरल हो गया कोई एक न्यूज हमारी वेबसाइट पे, तो पूरी दुनिया उसके ऊपर क्लिक कर रही है. सो इट्स पॉसिबल, इज इट ना? बट इट कांट बी नेगेटिव, इवन इट कांट बी फ्रैक्शनल. 1.5 हिट मिले ऐसा नहीं हो सकता भाई. 2.3 हिट, इट्स नॉट पॉसिबल. इज इट्स नंबर ऑफ हिट्स to Marwadi University's website in 1 minute. Now we know that this will follow the poison. बहुत poison की बात क्या है कि जहाँ पे number of trials it goes to infinite, number of times we are repeating the trial वो बहुत बड़ा होना चाहिए, probability of getting success काफी छोटी होनी चाहिए. Then that random variable follows the poison, that we know that, is it? So at the first look we can approximate that this random variable will follow the Poisson distribution. We're fine, we're good with that. Okay, now if I reverse the situation, if I'm going to take the inverse of this particular situation, यहाँ पे random variable था, that is number of heads, is it? Let me choose my pen. What's wrong with this? What's wrong with my pad? Just give me 1 minute. Yes, here it is. I'm talking about number of heads right now. Is it? Number of heads. Now, let me take you further. Now observe this. Number of minutes between two hits to Marwadi University's website. Number of minutes between two hits. That means we are talking about the duration between two clicks. एक क्लिक अभी आई, एक क्लिक 10 सेकंड के बाद आई. एक विजिटर अभी आया, एक विजिटर 15 सेकंड के बाद आया. एक विजिटर अभी आया, एक विजिटर 3.5 सेकंड के बाद आया. एक विजिटर अभी आया, एक विजिटर 1 सेकंड के बाद आया, दूसरा विजिटर 3.25 सेकंड के बाद आया. It's quite possible, is it? Now, if I'm gonna change my random variable as number of minutes between two hits to Marwadi University's website. Now, can you predict in this case, if I'm talking about number of minutes between two hits, if this is my random variable x, तो क्या आप में से कोई ये predict कर पाएगा कि that random variable will be discrete or continuous? क्या वो continuous होगा या तो फिर continuous होगा? क्यों continuous होगा बता मुझे. सर क्योंकि वो एक रेंज फॉलो कर रहा है, एक रेंज में चल रहा है, कंटिन्यूअसली रेंज में चल रहा है. Yes, in that we are following one of the interval. हो सकता है कि एक विजिटर अभी आए, 1 सेकंड के बाद, हो सकता है दूसरा विजिटर 1.5 सेकंड के बाद आए, 1.6 सेकंड के बाद आए. Is it ना? Here I am dealing with the time. Here we are dealing with the time. So time जो है वो तो continuous है. We know that. Is it? So ये देख, इसमें in this case and compare with this case, you can say this is a kind of inverse. भाई एक ही सिचुएशन है, पर उसमें यहाँ पे I was concerned about number of hits. Here I am concerned about a duration between two hits. Is it? So this is Poisson. This is exponential. Let me give you one more example. This picture shows the horse kick. Is it? One of the person is standing and the horse is kicking that person. तो एक घोड़ा जो है उसे लात मार रहा है. And number of soldiers, let me convert this particular into Poisson. The number of soldiers killed by horse kick per year. एक साल में कितने सोल्जर की डेथ हो रही है ड्यू टू हॉर्स किक. दैट नंबर विल श्योरली फॉलो द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. ये प्रूव किया हुआ है, कोई एक मैथमेटिशियन ने ये प्रूव किया है कि नंबर ऑफ सोल्जर इन द पर्शियन आर्मी, अगर इफ यू गोना सर्च दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, दिस पर्टिकुलर वर्ड, अगर आप इसको गूगल करें ना, नंबर ऑफ सोल्जर्स किल्ड बाय हॉर्स किक इन पर्शियन आर्मी, तो आपको एक रिसर्च पेपर मिलेगा. उस रिसर्च पेपर में वन ऑफ द मैथमेटिशियन जिसने भी वो पब्लिश किया उसने प्रूव किया हुआ है कि दिस पर्टिकुलर
number of soldiers killed by horse kick is following the poison distribution. So उसमें नहीं जाते हम, ठीक है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, stick with the example, basic जो बात करनी है वो करते हैं. So here the number of soldiers killed by horse kick per year. देखिए इसकी probability बहुत कम है, बहुत ही कम है. हॉर्स किक से किसी की डेथ हो जाए ऑकेजनली होता है, बहुत बहुत रेयर होता है, इज इट ना? So probability of getting success is very very low in this particular, बहुत ही कम होगा. That is the reason it will follow the Poisson distribution. अब इसी को अगर मुझे एक्सपोनेंशियल में डालना है, will anyone try? क्या इसको पॉइजन में से अगर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या लिखना चाहिए? कोई मुझे The हेल्प करेगा? number of नंबर year taken by the horse to kick a number of soldiers, something like that. Let me help you. Read this now. Number of years between two horse kick death of soldiers. Number of years between horse kick deaths of soldiers. दो soldiers जिनकी death horse kick से हुई है, उसके बीच का duration, number of years. That's it. Now, here you can easily predict. I'm talking about number of soldiers, so it will be integer. Minimum it will be 0. कोई भी नहीं मरा भाई. Yeah, it will be an integer, but it can't be fractional. वो fraction में नहीं जाएगा. But यहाँ पे देख, when I'm talking about number of years between two horse kick, तो वो जो है, we are talking about number of years, तो वो continuous में जा सकता है. It's totally possible, is it ना? Good. Now, one more. Our favorite place, is it? How many of you are tea lover? यहाँ पे जितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो टी लवर हैं, जिसको चाय पीना पसंद है? How many of you are? कितने लोगों को चाय पीना पसंद है? Drop a message on the chat box. It's okay, it's totally fine. चाय पीना किसी को पसंद नहीं है भाई? जस्ट एक बोल रहा है मुझे पसंद है, विधि को पसंद है, बाकी के लोग क्या कोल्ड कॉफी वाले हैं? निकिता, मानव, तुषार को नहीं पसंद है, ठीक है. विपिन को बहुत पसंद है. Good. So we guys are habituated to visit our first floor tea post, is it? हमारे कैंपस में फर्स्ट फ्लोर टी पोस्ट जो है, वहां पे हम फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं. अब चाय पीने जाए या फिर कुछ भी, चाय या फिर कुछ छोटा सा स्नैक्स के लिए जाए, पर हम जाते हैं. अब इसके लिए एक एग्जांपल मैंने बनाया, देखिए. नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइविंग एट द फर्स्ट फ्लोर टी पोस्ट इन 1 hour. In 1 hour. If I'm dealing with the number of customer, those who are visiting the first floor tea post in 1 hour, then that number of customer will be surely in discrete, will surely follow the discrete number table. Is it? वो एक हो सकता है, 2, 3, 100 लोग आ गए 1 घंटे में, हो सकता है. It's totally fine. And surely this will follow the Poisson distribution back. If I wish to convert this particular situation in terms of time, अगर मैं इसको time के reference में देखूं, the number of hours between two customer arrive at the first floor tea post, then that random variable, number of hours between two customer arrive, that random variable will be in the continuous form and it will follow the exponential distribution. So look, from this 3 example, one can easily understand that there is a fixed relation between Poisson and exponential. जब मैं Poisson का inverse ले रहा हूँ, then जो भी, if I am taking inverse of Poisson in reference of time, then जो भी नया random variable मिलेगा ना, वो इसको हम बोलेंगे that is exponential distribution. So events per single unit of time, Poisson में हम बात करते हैं events per single unit of time, और यहाँ पे हम बात करते हैं time per single unit. So this is a kind of inverse. This is a kind of inverse between both of them. मैं जो बात कर रहा था ना, a kind of inverse. Here you can easily identify events per single unit of time, and here it is time per single unit. That means exponential variate is actually the time between two events which are in Poisson distribution. That means
you like, we may think like inverse of poison. I need just 1 minute. Hello. Yes, बात करूँ छू.
Am I audible? Hello? 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 Yes, sir. Okay. Okay, sorry for the disturbance. 2-3 इश्यू थे, अभी सॉल्व करके आया हूँ. ठीक है. So we were talking about Poisson, is it? A relation between Poisson and exponential. Now, as we know that exponential is actually the time between events which are in Poisson distribution. Exponential variate वो क्या है? It is actually the time between two events. वो दो event है वो Poisson में होनी चाहिए. This is what the whole funda related to exponential. Is it? Good. Let me take you for the probability डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. एज वी नो दैट अगर हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कोई एक वेरिएबल के लिए होगा, या तो वो डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूस होगा. अभी हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मींस वी आर डीलिंग विद द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. सो देयर मस्ट बी वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, उसका एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा. एंड एज वी नो दैट वी आर डीलिंग विद द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. इज इट? So let me take you for the distribution formula. वो कैसे होगा, distribution function कैसे होगा? A continuous random variable x is said to follow exponential distribution if its probability function is given by like this: f of x lambda e raised to minus lambda x. कब? जब x 0 या 0 से बड़ा. And in all the other cases, in otherwise, that means if x is less than 0, if x is negative, then all that cases f of x will have 0. Now, this is actually the probability density function for the exponential distribution. This is what we are supposed to follow. Here, lambda is always positive. It is known as a rate of distribution. It will be known as a rate of distribution. कुछ और बातें हैं जो यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा. When times between random events follow the exponential distribution with rate lambda, then the total number of events in a time period of length t follows the Poisson distribution. मानी कि what I'm saying, इसका reverse जो है वो Poisson है, हमको पता है. So this is what I had written over here in with some of the mathematical terminology, nothing else. Okay. Let me take you further. Exponential distribution is memoryless distribution. Now, this is very, very important. This is very, very important. Exponential distribution is memoryless distribution. Now, why I'm saying that this is memoryless distribution? या कि मानी कि उसके पास कुछ याददाश्त नहीं है. अगर हम बोले ना in usual words, this is a distribution कि जिसके पास याददाश्त नहीं है. उसको क्या, this is a kind of गजनी. गजनी याद है किसी को? गजनी एक मूवी आया था जो भूल जा रहा है 10 मिनट के पहले उसके साथ क्या हुआ था. Is it ना? A similar kind of distribution is this. So इसको हम बोलेंगे रूटीन में कि this is a गजनी distribution. Okay? ठीक है. अब ये कैसे, क्यों ये मेमोरीलेस बोल रहा हूँ उसको, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा. बट अगर यहीं पे मैं उसको एक्सप्लेन करने बैठ गया कि व्हाई इट इज अ मेमोरीलेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए सेशन, बिकॉज उसके लिए थोड़ा कुछ बेसिक चाहिए. सो वेट फॉर दैट, विल एक्सप्लेन इन दिस सेशन ओनली. लेट मी टेक यू फर्दर. वी नीड टू डिस्कस अबाउट पैरामीटर्स. हमको मीन क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज मोड, व्हाट इज मीडियन, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, वेरिएंस क्या है. सो चलिए जल्दी से वो देख लेते हैं. मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब पता है वी आर डीलिंग विद द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो मीन की फॉर्मूला क्या होगी? फॉर द मीन वी विल टेक हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन. इज इट? सो एक्सपेक्टेड वैल्यू माने कि मीन, इट इज नथिंग बट integration running from minus infinite to infinite x f of x dx, where f of x is what? F of x is its probability function. So f of x अभी हमने देखा कि उसका probability function क्या है, lambda to the power lambda e to the power lambda x, negative lambda x. तो वही हम करेंगे, पर देखिए यहाँ पे लिमिट चेंज हो गई. in a definition that is minus infinite to infinite, as we know that. अब पता है हमको फंक्शन किस तरीके से डिफाइन, f of x is lambda power e raised to minus lambda x. कब? if x is greater or equals to 0.
And otherwise, in all the other cases, f of x will act as a 0. In all the other cases, that means x is less than 0. Is it? So here, 0 से infinite, 0 से positive infinite में वो function होगा lambda into e to the power minus lambda x. And all the other cases, that means minus infinite से 0, वो इंटरवल में f of x 0 होगा. मानी कि अगर इस इंटीग्रेशन का मैं दो पार्ट करूं, I need to divide this integration, the first step, into two different parts. Minus infinite to 0, the same function over here, plus 0 to infinite. पर ये माइनस इनफाइनाइट से 0 में जो f of x होगा ना, वो 0 होगा, तो इसका कोई मतलब नहीं, ये निकल जाएगा. दैट इज द रीजन दिस इंटीग्रेशन इज कन्वर्टेड इन 0 to infinite. The function will be saying x lambda x, is it? So that is the reason. Good. And with the simple basic tactics related to इंटीग्रेशन, अगर इसका इंटीग्रेशन मैं निकालूं, बहुत ही आसान होगा, इसको थोड़ा सॉल्व करूं, देन आई विल हैव एक्सपेक्टेड वैल्यू एज 1 by लैम्बडा, 1 upon लैम्बडा. देखिए यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है. इफ यू कैन आइडेंटिफाई, किसी को याद है व्हाट वाज द मीन फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या था, किसी को याद है? What is the mean for the Poisson distribution? Can anyone recall that? Mean for the Poisson distribution? Poisson distribution lambda था. अब देख यहाँ पे mean क्या है? 1 upon lambda. Is it? Good. Let me take you for the next one. What will be the variance? अब variance की formula क्या है वो भी हमको पता है. Variance, that is e of x square minus e of x the whole square. उस तरीके से कर सकते हैं. So variance of x is e of x square minus e of x the whole square. जब पहले निकालते हैं what will be e of x, तो हमारे पास है e of x मानी कि x that expectation वो हमने अभी कर लिया कि e of x is 1 upon lambda, तो ये वैल्यू है हमारे पास. We are good with that. So we need to find e of x square. तो ये पहले फाइंड करते चलिए. e of x square के लिए क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ जहाँ पे x था वहाँ पे x square करेंगे, nothing else. So x square f of x, so integration फिर से 0 से infinite में convert होगा, because minus infinite to 0, that function is nothing but 0. So simplifying that, अगर इसको थोड़ा सा simplify करें with the use of Leibniz rule, integration by parts वाला rule अगर apply करके मैं अगर इसको simplify करूँ, तो मुझे e of x square मिल रहा है, that is 2 by lambda square. This is not my variance, but this is just the e of x square. Yet I need to go for the variance of x. अब उसी को variance of x की फॉर्मूला में मैं डाल दूं, e of x square जैसे हमने अभी फाइंड किया, that is 2 by lambda square. Variance of expected value of x, e of x, वो हमको पता है 1 upon lambda है, उसका स्क्वायर निकलना है, so it will be 1 upon lambda square. So 2 upon lambda square minus 1 upon lambda square will be rest with 1 upon lambda square. That is nothing but the variance. तो variance क्या है इसका? 1 upon lambda square. अगर variance 1 upon lambda square है, तो अगर वेरिएंस है 1 upon lambda square, तो हमको पता है वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, that is nothing but the positive square root of variance, is it? So variance is 1 upon lambda square, and उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं निकालूं, it will be positive square root of variance. 1 upon lambda square root of 1 upon lambda square, it will be 1 upon lambda. Now let's go for the mode. अब मोड की वैल्यू क्या है? वी नो दैट मोड की वैल्यू, मोड मानी कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे बड़ी है, व्हेन द प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट high, at that stage we can consider as a mode. So mode of the value of x, mode is the value of x for which f of x is maximum. This is a kind of typo over there, let me correct that. It should be x greater than equals to 0, this should be strictly less than 0, is it? It's kind of type over there. It's okay. So as we know that this is a probability density function for the exponential distribution f of x is lambda e raised to minus lambda x और 0. ये कब है? अगर x 0 या 0 से बड़ा है. अब आप बहुत आसानी से ये फाइंड कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम कब हो सकता है. When it will be a maximum. ये एक ही जगह पे मैक्सिमम हो सकता है कि जब x की वैल्यू अगर मैं 0 लूँ, तो ये मैक्सिमम तभी हो सकता है if x is 0. Why? Observe, where is x? X is lying in the power of exponential and it is in the negative power. So e का negative power
ई का अगर नेगेटिव पावर निकालो तो उसकी वैल्यू कम होने वाली है। वी आर लुकिंग फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। सो ये मैक्सिमम तभी होगा जबकि ई की पावर 0 हो जाए। और ई की पावर 0 को जाए, लैम्बडा इज माय रेड पैरामीटर, व्हाट दैट विल बी नॉट 0। सो एक्स 0 हो तभी ये पूरा 0 होगा। वी आर इंटरेस्टेड इन ई रेस टू लैम्बडा एक्स, नेगेटिव लैम्बडा एक्स, ये 0 होना चाहिए। ये 0 कब होगा? अगर मैं एक्स 0 लूँ तब। e raised to 0 will be 1 और 1 यहाँ पे अगर रिप्लेस करूँ तो that will be lambda. So that will depend on lambda. Lambda जो भी आए, and we know that lambda is always positive. So lambda जो भी आए, that will be the maximum. So we are interested in value of x. x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है? तो एक ही हो सकती है, that is x equals to 0. So that is the reason x equals to 0 is the mode for the exponential distribution. अगर आपको कोई पूछे कि what is the mode for the exponential distribution, you can clearly say that x equals to 0 is the mode for the exponential distribution. Is it? Do we have any query in this? किसी को कोई doubt है इसमें? Let me know. Are we good? Should I go ahead? Am I clear? Am I audible to all of you? Are we good to move ahead? Let me know quickly on the chat box. Drop your comment on the chat box. अभी तक किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं डाउट है तो हम आगे बढ़ते हैं. Good. More benefit median. We are not worried about median, जाने दो उसे. Examples of exponential. Let's go for the examples. How to deal with the examples? The first example. Let x be a exponential random variable with probability density function f of x equals to 1 by 5 e to the power minus x by 5. That x is, it should be once again, यहाँ पर मैंने गलती की है, it's a typo. X is greater than equals to 0, good. Then find probability that x is positive, x is greater than 5, x is lying between 3 to 6. इसका मीन भी फाइंड करना है, वेरिएंस भी फाइंड करना है. पता है मीन क्या है? मीन इज 1 अपॉन लैम्बडा. वेरिएंस क्या है? 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर. अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बोले तो है 1 अपॉन लैम्बडा. We are aware about that, is it? So this is what the output for the function. It is having a value 1 by 5 e to the power minus x by 5 और 0. ये कब लेना है? If x is positive. और ये कब लेना है? If x is less than 0. Good. अब बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन सॉल्व करने. क्यों? क्योंकि हमारे पास फंक्शन है. We can easily identify lambda. इसको अगर हम कंपेयर करेंगे इसके एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी फंक्शन से तो बहुत आसानी से हमको लैम्बडा मिल जाएगा. एंड वंस वी आर हैविंग लैम्बडा तो बात खत्म है. बहुत ही आसान है सॉल्यूशन करना. देखिए बाय कंपेयरिंग दिस पर्टिकुलर, वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे लिए? एफ ऑफ एक्स वो फंक्शन है क्या? एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट लैम्बडा ई टू द पावर माइनस लैम्बडा एक्स when that x is greater than equals to 0, and all the other cases if x is less than 0, in that case 0. If you're going to compare this with this, if you're going to compare both these functions, then you can easily identify the value of lambda. देखिए lambda की value क्या होगी? Lambda will be 1 by 5, is it? 1 by 5 into x minus 1 by 5 into x, it will be minus x by 5. So by comparing that, we can easily identify lambda is 1 by 5. If we are having a lambda, तो बात खत्म. बहुत ही आसान है. We are interested to find probably that x is greater than 5. Then we need to integrate that particular, we need to take integration from 5 to infinite. Is it? So इसका इंटीग्रेशन करना है बस 5 से infinite तक. बहुत ही आसान है. 1 by 5 will remain as it is. उसको कांस्टेंट की तरह बाहर रख रहा हूँ. e to the power minus x by 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? e to the power minus x by 5 डिवाइड बाय minus 1 by 5. ये minus 1 by 5 plus 1 by 5 उसको कैंसिल कर सकता हूँ मैं. ये नेगेटिव साइन बाहर रख सकता हूँ. देखिए यहाँ पे अब I'm supposed to replace upper limit, lower limit. एक बार x की जगह पे minus, एक बार x की जगह पे infinite, फिर x की जगह पे 5. So if I'm gonna replace infinite in place of x, then it will be minus infinite by 5. Minus infinite by 5 is infinite, but due to that negative sign, it will act as a e raised to minus infinite, and we all know that e raised to minus infinite is nothing but 0. So upper limit 0 होगी, lower limit minus x की जगह पे 5, 5 will be cancelled, so e to the power minus 1. Then this minus will become plus e raised to minus 1, मानी कि 1 upon e, and 1 upon e you can easily identify from the calculus that will be 0.3675. So to deal with this kind of examples
In the exponential it will be very easy. Exponential में इसके साथ काम करना बहुत ही आसान है. Exponential के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है. बस एक ही दिक्कत हो सकती है, you must be good with the integration. You must be good with the integration. Is it? So let me know. Are we good with this? Are we good with this? ये समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? हाँ या ना? Hello. Good, 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 good. 2-3 लोग हैं जो आंसर कर रहे हैं, बाकी के क्या कर रहे हैं? Any reply from all of you? चलिए सेकंड जो है यहाँ पे, सेकंड probability that 3 is less than equals to x is less than equals to 6, इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी? कौन बताएगा मुझे? Unmute yourself and talk to me. Unmute yourself and give me the formula for this particular probability that x is lying between 3 and 6. 3 is less than equals to x is less than equals to 6. One of you will unmute yourself and will give me the formula for this. हेलो, ये प्रॉक्सी वाला लेक्चर नहीं है ना? हाँ, आप मेरे साथ पिछले 2 महीने से हैं. इज इट? कौन बताएगा इसकी फॉर्मूला? 3 is less than equals to x is less than equals to 6. आपके पास रेफरेंस में ये फर्स्ट क्वेश्चन है. ये आई एम नॉट गोना चूज एनीवन. वॉलंटरी आप करेंगे कि नहीं करेंगे? सर लोअर लिमिट और अपर लोअर लिमिट 3 होगा, अपर लिमिट 6 होगा इसमें. तो यही तो बताना था. इतनी क्यों देर लगा रहा था तू? क्या वेट कर रहा था किसी की बेटा? इट विल बी इंटीग्रेशन रनिंग फ्रॉम 3 to 6 f of x dx. इतनी छोटी सी बात तो होगी. अब चल ये इंटीग्रेशन कर लेते हैं. 3 to 6 f of x क्या डाल दूं? f of x, my x is lying in the positive interval, so यही होगा f of x. 1/5 को मैं बाहर रख दूं. e to the power minus x by 5 dx बहुत आसान होगा. 1/5 e to the power minus x by 5 का इंटीग्रेशन यहाँ पे हमने किया ही था. अभी देख, it will be e to the power minus x by 5 minus 1/5. लिमिट क्या है? 3 to 6. अब ये दोनों कैंसिल कर दे, नेगेटिव साइन बाहर लिख दे. It will be minus e to the power minus x by and 3 to the 6. अब x की जगह पे एक बार 6 लिखना है, दूसरी बार x की जगह पे 3 लिखना है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ये कैलसी से बहुत आसानी से हो जाएगा. हाँ या ना? आया समझ में? Good, 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 good. So let me show the solution for second one. Yes. Go through it. It's ditto same जो VPM में अभी हमने बोला, अभी हमने डिस्कस किया. It's literally same. और नीचे ये जो सॉल्यूशन आ रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट. वो तो कैलसी से बहुत आसानी से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है वो. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू गिव. थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट मीन. अब इसका मीन क्या होगा? तुषार बता दे. नहीं तू मत बता, निकिता बता दे. निकिता, व्हाट विल बी द मीन ऑफ दिस? एक्सपोनेंशियल के लिए मीन हमने क्या डिफाइन किया अभी? व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू? मीन माने कि एक्सपेक्टेड वैल्यू. एक्सपेक्टेड वैल्यू की फॉर्मूला क्या निकाली हमने? मीन बोलूं या तो फिर बोलूं एक्सपेक्टेड वैल्यू, या तो फिर मैं लिखूं e ऑफ x. इसकी फॉर्मूला अभी हमने प्रिपेयर की बेटा. एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, निकिता यू देयर? यस निकिता. 1 upon lambda. Yes, 1 upon lambda. और lambda क्या है हमारे पास? Lambda is 1/5, so it will be 1 upon 1/5. तो उसका मीन क्या हो जाएगा? 5. That 5 will go in the numerator. So इसका मीन 5 है. Good. अब वेरिएंस क्या होगा? कौन बताएगा? वेरिएंस की फॉर्मूला क्या निकली थी? 1 upon lambda square. याद है किसी को? 1 upon lambda square. So variance will be 25. Exactly correct. 25. Good. So mean variance is, we're good with that. Mean hoga 5, variance hoga 25. Good. So that was the first basic question related to exponential. Let me take you for the second one. Now this, let x be the exponential random variate. It is clearly mentioned in the question. Exponential का कोई भी question होगा, उस question में clearly mention किया होगा कि exponential variate है.
या तो फिर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, डोंट वरी, यू आर नॉट सपोज टू डिसाइड कि हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि नॉर्मल, जैसे कि हमको बाइनोमियल और पॉइजन में डिसाइड करना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज सुटेबल फॉर बाइनोमियल, दिस इज सुटेबल फॉर पॉइजन. यहाँ पे वो डिसाइड नहीं करना होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल वो मेंशन किया ही होगा. सो दिस इज अ फंक्शन f of x is c e to the power minus 2 by x minus 2x. X is greater equals 0. यहाँ से फिर यहाँ पे greater equals 0. And in all the other cases, if x is less than 0, then f of x is 0. Now, what we need to find? We need to find probably that x is greater than 2. And second, we are going to find x is less equals 1 by c. 1 by c. Now, observe. And this particular, एक unknown है, that is c. So first we will go for that. वो c identify करेंगे हम. Once we are good with c, हमको c मिल गया जैसे ही, अगर c मिल गया है तो उसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर ले. मान लीजिए कि c की वैल्यू 2 है, मान लीजिए कि c की वैल्यू 3 है, जो भी है हम उसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे. Then we will go for both this. Then we will go for both this. Is it? So I'm giving you just 1 minute. You need to use one of the fact from our first unit. फर्स्ट यूनिट में से आप एक फैक्ट यूज करेंगे. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो उसका पूरा इंटीग्रेशन 1 ही होगा, ये पता है आपको. तो यूज दैट पर्टिकुलर, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ सी. अगर आपको सी मिल जाए देन यू विल गो फॉर probability that x is greater than 2 and probability that x is less than 1 by c. I'm giving you 2 minutes and then I will be picking a random person from the audience. किसी एक को पूछूंगा कि what is the value of c and what is the value of probability that x is greater than 2. You're having your 2 minutes starts now. C की वैल्यू मिली किसी को? What should be the value of C? Okay, C की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे? You will be using this fact. As we know that this is probability density function. अगर ये probability density function है तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक वो पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 होगा. यूज दैट पर्टिकुलर, उसको यूज करके आपको C मिल जाएगा बहुत आसानी से. That means this will be the tactic minus infinite to infinite f of x dx. Surely that will be 1. Then and then it will be a probability function. Otherwise, ये probability function नहीं हो सकता है. To use this particular fact to identify c. Minus infinite से infinite है वो 0 से infinite हो जाएगा because x is, if x is positive then and then it is c e raised to minus 2x. Otherwise it is 0. So बहुत आसान हो जाएगा. That will be 0 to infinite. f of x यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए. यही वाला c e raised to minus 2x उसको इंटीग्रेट कीजिए. सामने 1 लेना ही है because this is probability function. Then identify the value of c quickly. c की वैल्यू जैसे ही मिल जाए, drop a message on the chat box. You must be, all of you must be trying. I'm waiting for your answer. C मिल गया किसी को? How many of you are trying? What's the value of C? What is the value of C? सर 2 शायद. शायद नहीं.
Sir, 2 probably हाँ 2. हाँ सर पक्का 2. Pakka 2 na? The value of C will be 2. Yes, you are correct. As it is a probability density function, तो उसका पूरा इंटीग्रेशन 1 होगा जैसे मैंने अभी बोला, और वो इंटीग्रेशन छोटा सा अगर आपका दे, then you will have C by 2 equals to 1, that means C equals to 2. So अब ये जो हमारा फंक्शन है ना, f of x equals to C e to the power minus 2 by x, that will look like this. तो C की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे. Now my function will be like that, 2 e to the power minus 2x, when if x is greater equals to 0, and otherwise it is 0 if x is less than 0. Good. Now this is my function. Up, use this function to identify probability that x is greater than 2. That means अब हम जाएंगे probability that x is greater than 2. इसका मतलब क्या होगा? We need integration from 2 to infinite f of x dx. अब f of x है हमारे पास, वो क्या है? That is 2 e to the power minus 2x dx. That's all. अब ये छोटा सा इंटीग्रेशन कर दो चलो जल्दी से, and give me that particular value. उसकी वैल्यू जो भी आ रही है जल्दी से बता दो. Go for this integration quickly. बहुत ही आसान होगा ना. 2 will remain as it is, e to the power minus 2 by x, it will be e to the power minus 2 by x divided by minus 2. that 2 will got cancel out, और आप बचेंगे, आपके पास बचेगा सिर्फ e to the power minus 2x. उसमें आपको एक बार इन्फिनिट रिप्लेस करना है, दूसरी बार 2 रिप्लेस करना है. इन्फिनिट जब रिप्लेस करेंगे that will be e to the power minus infinite, and e to the power minus infinite 0. बहुत ही आसान होगा. Let me show you. That is quite easy. That will be quite easy. Wait. Yes, this will be the case, and answer will be e to the power minus 4. E to the power minus 4 will be 0.0183. Is it? And in the last part, we are looking for probability that x is less than 1 by c. अब c हमको पता है, that means what we are finding? We are finding x is less than 1 upon 2. Is it? Less than. That means कि जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस इनफाइनाइट से 1 by 2 f of x dx. पर माइनस इनफाइनाइट से 0 तक तो पता है, माइनस इनफाइनाइट से 0 तो 0 है. दैट मीन्स वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन 0 से 1 by 2. इंटीग्रेशन होगा 0 to 1/2. f of x जो हो वो है 2 e to the power minus 2x dx. That will be the case in the third one. Is it? Let me show you कैसे करेंगे हम. यस, सी की वैल्यू 1/2. अब वो इट विल बी कन्वर्टेड इन 0 to 1/2. कैसे, वो मैंने अभी आपको बताया. सिमिलर काइंड ऑफ इंटीग्रेशन विल बी देयर. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तीनों में इंटीग्रेशन तो सेम ही. देखिए लिमिट सिर्फ चेंज हो रही है. इज इट? सो आर वी गुड विद दिस? आर वी गुड विद एग्जांपल 2? कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए. तुषार, स्मित, रिद्धि, पथिक, निकिता, मंथन, मानव, जस, गिरीश, दीपेन, देवांश, विपिन, आयुष, आदित्य. आर वी क्लियर विद दिस? डाउट है तो बताइए जल्दी से, नहीं है तो भी बताइए. रिप्लाई in the chat box quickly. I'm waiting. Good. Let's go for the third one. The mileage which car on a gap with a certain kind of radial tire is a random variate having an exponential distribution. So here, mileage of a car, that is our exponential distribution. The mileage of a car, it's a continuous random variable, is it? Now, for that mileage, we are concerned about a certain kind of radial tire. We are not worried about that particular information. Good. So the information is that
माइलेज ऑफ द कार इज इन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका मीन भी दिया हुआ है, मीन इज 4000 किलोमीटर, मीन इज 4000 किलोमीटर. Find a probability that one of this tire will last, one of these tires will last at least 2000 kilometer and at most 3000 kilometer. Okay, so we are looking for at least 2000 kilometer and at most 3000 kilometer. So can you help me for this? Or if you guys are clear about example 1 and 2, then it will be very easy to understand, as all the data is crystal clear that we are dealing with the exponential distribution. उसका mean है हमारे पास, जो find करना है that is at least 2000, या मानी कि 2000 से बड़ा चलेगा, at most 3000 that means 3000, या उससे कम चलेगा. ठीक है, mean जो है 4000 है, उसको मैं कैसे मेंशन करूंगा? देखिए, let x be a exponential random variable which denotes the mileage obtained with the tire. Mean is 1 upon lambda, which is actually 4000 as is provided. Wait, give me 1 minute. Let me show you the solution once go through it. I will be just here. So how many of you are getting this? कितने लोग हैं जिसको ये समझ में आ रहा है? देखिए, मीन जो है वो दिया हुआ है, that is 4000, that is, and we are knowing what is the formula for the mean, that is 1 upon lambda. So if 1 upon lambda is 4000, then lambda, which we need for our formula, that will be 1 by 4000. So our function will look like 1 upon 4000 e to the power minus 1 by 4000 x. अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे for both that probabilities, x is greater equal 2000, x is less than or equal 3000, and जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ही आसान ही रहेगा, क्योंकि 1 by 4000 will remain outside और डिनोमिनेटर में 1 by 4000 बनेगा ही बनेगा, तो वो दोनों कैंसिल होने ही वाले हैं. और e का जो पावर है वो तो हमको कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर से, सो कोई बड़ी बात नहीं है. गो थ्रू इट वंस. अभी बताओ जितने भी लोग यहाँ पे हैं, क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को, हाँ या ना? I need a reply from all 19 students, those who are present in this meet. All 19 will reply over here. तो क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं? Need a reply from all of you. हर एक बच्चा यहाँ पे रिप्लाई करेगा, समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा है तो बताओ मुझे. आई एम गोना एक्सप्लेन, इवन आई कैन एक्सप्लेन इंटीग्रेशन वाले स्टेप जो है वो भी, अगर मैं आपको दिक्कत है तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ. I'm good with that. Quickly drop message on the chat box. Good. So almost all of you are clear with this. It's just you just need to practice this. कोई बड़ी बात नहीं इसमें. It's very easy. Exponential के साथ काम करना बहुत ही आसान रहेगा. One more question. This is quite interesting. A daily consumption of milk in excess of 20,000 gallon is approximately exponential distributed with mean 3000 gallon. Now, understand this particular line neatly. The daily consumption of milk in excess of 20,000 gallon, 20,000 गैलन से ज्यादा की जो खपत है ना, not
बिलो 20,000 के बाद जो कंजम्पशन हो रहा है, द डेली कंजम्पशन ऑफ मिल्क इन एक्सेस ऑफ 20,000 गैलन इज अप्रोक्सीमेटली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन। अब अगर 21,000 गैलन का कंजम्पशन हो रहा है तो वो जो लास्ट वाला 1,000 है, 20,000 से ज्यादा वाला जो, वही है जो कि एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो टेक केयर अबाउट दैट। उसका मीन जो है वो 3,000 है। द सिटी हैज डेली स्टॉक ऑफ 35,000 गैलन। हमारी सिटी के पास स्टॉक है वो 35,000 गैलन का है। Now, what is the probability that 2 days selected at random, the stock is insufficient for both the days? Yeah, I'm not worried about 2 days or 3 days or 4 days or 5 days. It's totally okay. What is the probability that 2 days selected at random, the stock is insufficient for both the days? स्टॉक कितना है हमारा 35,000 गैलन का। हमको 20,000 से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा का जो भी कंजम्पशन है, दैट पर्टिकुलर इज एन एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट पर्टिकुलर इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सफिशिएंट इनसफिशिएंट हो जाए ये स्टॉक, कम पड़ जाए इतना सारा दूध जो हमने स्टॉक करके रखा है 35,000, 2 दिनों के लिए कम पड़ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है। Let me show. We need to define some of our variable. I'm defining 2 different variables. Observe here, because वो जो है ना 20,000 से excess जो हो रहा है, that is exponentially distributed. So उसके लिए मैं I'm taking help from one of the other variable. Let y is a random variable which denotes the daily consumption of milk. What is y? Right now my y is random variable which denotes the daily consumption of milk consumed in a day. एक दिन में जितना भी दूध कंज्यूम हो रहा है, that is y. Now the random variable x को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, that is y minus 20,000. क्योंकि why I need to define x like this, because the reason is that in excess of 20,000 gallon is approximately exponentially distributed. That is the information we are having. So 20,000 तक जो खपत हो रही है, that is okay. उससे ऊपर, उससे ज्यादा जो भी हो रहा है, that is exponential distributed. That is the reason I'm defining my exponential distribution, exponential variate x as a y minus 2,000, where y is my daily consumption, minus 20,000 वो जो कंडीशन दी हुई है कि 20,000 से ज्यादा है, वही exponential distributed. That is the reason x equals to y minus 20,000. This particular variable has the exponential distribution. Now let me move ahead. मीन जो है वो दिया हुआ है, that is 3,000 गैलन। मीन मानी कि 1 upon lambda, so lambda हो जाएगा 1 by 3,000, वो हम आगे देखेंगे। Yes, here it is, lambda is 1 by 3,000. Now the probability density function f of x is, as we know that for the exponential distribution, my probability density function is f of x is lambda e to the power minus lambda x. If x is greater equals to 0, if x is greater equals 0. So lambda, as we had just identified, lambda is 1 upon 3,000. So 1 upon 3,000 e to the power minus 1 upon 3,000 lambda x. This is my probability density function. अब देखिए आगे के सारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, यहाँ पे हमने बनाया। This is your task. If this question is that in the exam, so you must be knowing a probability density function for the exponential distribution का जो probability density function है वो आपके पास होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, तभी जाके आपको ये function मिलेगा, and then you may move forward. वरना नहीं हो सकता, is it? It is clearly mentioned over here, exponentially distributed. मानी कि we are dealing with the exponential distribution. So this will be a probability density function, मानी कि probability function ये होगा. And now what we are looking for? Now the probability that stock is insufficient for 2 days. Stock is insufficient for 2 days. That means what? Observe. What is a y? Y is daily consumption. अब daily consumption अगर 35,000 से बढ़ गया, मेरे पास स्टॉक तो है 35,000 का, इज इट? अब 35,000 से वो बढ़ जाए
तब जाके हम बात करना है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि the stock is insufficient. That is the reason. If y is greater than 35,000, that is what we are finding. When y can greater than 35,000, y can cross that particular limit of 35,000. डेली कंजम्पशन अगर जो स्टॉक जो है 35,000 का उससे बढ़ जाए तो हम बोल सकेंगे कि स्टॉक जो है वो इनसफिशिएंट हो गया. सो वी आर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी दैट y इज ग्रेटर देन 35,000. दैट मीन्स अगर इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूं y को 35,000 माइनस 20,000, दैट मीन्स कि x की वैल्यू हो गई 15,000. दैट इज ए that will be the case. So y is greater than 35,000 will be literally equals to x is greater than 15,000. Now this is the twist in this question. अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये अगर कोई बात समझ में ना समझ पा रहा है तो बताओ, because this is what we must be knowing. ये पता होना चाहिए. अगर ये समझ में आ गया तो बात खत्म. आगे के क्वेश्चन में कोई दम नहीं है. इट विल बी रूटीन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस. जैसे हमने आगे 3 क्वेश्चन किए वैसे ही होगा ये. इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी. So let me know whether you guys are good with this information or not. क्या ये बात समझ में आ रही है हर किसी को? जल्दी से बता दो. Are we good with this? जिसको मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ये वाला पार्ट, क्या ये समझ में आ रहा है? Can you explain what is X? यस, अनम्यूट कर दे बेटा. हाँ सर. देख स्टॉक कितना है तेरे पास? स्टॉक यस कितना? सर. स्टॉक कितना स्टॉक है? 35,000 नहीं 35,000 20,000. हाँ नहीं, 35,000. स्टॉक देख. तेरे पास एक गोडाउन 35 में सर. 35,000 गैलन मिल्क पड़ा है. ठीक है. यस सर. अब बात क्या है कि 20,000 से बढ़कर जो भी कंजप्शन है ना वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है. 20,000 तक है तो वो ठीक है. 20,000 से ज्यादा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी कंजप्शन हो रहा है वो सारा एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इज इट? सो हाँ सर. हमने 2 वेरिएबल आइडेंटिफाई किया. एक तो y क्या है? डेली कंजम्पशन जो भी एक दिन में खत्म हो रहा है. एक दिन में हम लोग खपत कर रहे हैं मिल्क की, जितना भी मिल्क यूज कर रहे हैं, दैट फिगर इज y. व्हाट इज x को मैंने y के ऊपर से डिफाइन किया कि भाई 20,000 से जो भी बड़ा है, माने कि y में से 20,000 निकाल दूं तो जो भी फिगर आएगा दैट इज माई x. why I'm doing that? Because my x is gonna act as exponential variate. और मुझे पता है exponential variate क्या है. 20,000 से ज्यादा जो भी खपत हो रही है, that is my exponential variate. So that is the reason I had defined x as a y minus 20,000. ये समझ में आया तुझे? पहले ये बता. हाँ सर, ये आ गया. गुड. अब हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है कि भाई स्टॉक कम पड़ जाए. कितना स्टॉक है तेरे पास? 35,000 है. ये कम पड़ना चाहिए. मानी कि कंजम्पशन बढ़ना चाहिए 35,000 से. कंजम्पशन को हमने क्या बोला है? वाई. डेली कंजम्पशन को क्या बोला? वाई. इट मस्ट बी ग्रेटर देन 35,000. अब ये इससे बड़ा हो जाए तभी स्टॉक कम पड़ गया. हाँ या ना? हाँ सर. तो देख, दिस इज द रीजन कि मैंने क्यों यहाँ पे सर, ये अब लिखा आ है. गया, अब आ गया. अब अगर y 35,000 से बड़ा है, माने कि x उसमें से 20,000 निकाल देने तुझे, माने कि x की वैल्यू 15,000 से बड़ी है. हाँ या ना? तो Yes, ये sir. फाइंड कर या तो फिर ये फाइंड कर, दोनों एक ही होगा ना. नाउ वी आर नॉट गुड विथ y हमको नहीं पता कि y कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में है, पर हमको पता है कि x जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में है. दैट इज द रीजन कि हम x में से y में से x में जा रहे हैं. नाउ इसका मतलब ये हुआ कि x 15,000 से बड़ा, वही फाइंड करना है. तो x, तो ये इसकी फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की. उसमें x की वैल्यू डाल दे, बस खत्म. 15,000 टू इनफाइनाइट f ऑफ x. ये सारा एक बार सॉल्व कर लेते. चल देखते क्या होगा. होपफुली तुझे समझ में आ रहा है अभी? यस सर. गुड. इज इट गुड? इस हर कोई बच्चा एक बार देख लीजिए. वंस गो थ्रू दिस सॉल्यूशन प्लीज. आई एम जस्ट हियर. कोई प्रॉब्लम आ रहा है मुझे
So are we good with this? कोई डाउट तो बताओ, या तो समझ में आ रहा है? यस, निकिता, both the Nikitas. Nikita, unmute yourself. Nikita Kakkar, Yes, sir. how's you? So good. समझ में आ रहा है सारा? हाँ सर, ये आ रहा है। एक्सपोनेंशियल वाला सारा केस समझ में आ रहा है? हाँ सर। गुड 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 गुड, थैंक यू। अभी कोई क्वेश्चन में डाउट है? अभी ये इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? नहीं, ठीक है, चलो।